already succeeded in your business previously till today. Nothing changes but you achieving for another goal by defining your vision. Everyone's good, hands up, perfect. The second key point is leadership alignment. So when we talk about leadership alignment, especially within the affiliate marketing sector, every single person you're speaking to, or every single person you bring on board, or every single person you grow with is following in what you teach them, is following in your footsteps. We may have the system within the organization. However, people don't tend to affiliate themselves with the system itself. People affiliate themselves with the leader that introduces the business model to the person they're speaking to. So it's so super important to have your leadership align with the company and the organization's ethics. So get familiar with that ethics, get familiar with how we present ourselves, get familiar with how we speak to others, and get familiar with how we carry ourselves individually as people. This is so super important, and I can't stress the fact anymore. So ensure that leadership communicates and embodies the desired mindset to set an example for the rest of the organization. It's so super important. If you can see this, screenshot it and save it somewhere that you'll be able to read it every day. The third key point, training and development programs. I mean, this is so simple as well. Implement training programs that focus on mindset development, resilience, and adaptability for all employees at all levels. Now, I know we don't look at each other as employees, or we look at each other as, as business owners. However, this is the same meaning. The programs that we have in place are there for you to use. You're in business for yourself, but you're never by yourself. And this is the most important factor to remember, whether you're starting fresh or redeveloping the business that you currently have. So ensure that you use the training programs, ensure that you use the system. If you're starting from scratch, if you're just new to the organization, utilize the systems that we have in place, the training programs that we have in place. We've just launched a new one and it's so super exciting. So be sure to use that. And also for the people that have been in the organization for almost 4 years since we started, ensure that you're creating a system that's taken from us and used, we've created. Ensure that the system that you're passing on is so ethical and so simple for anyone to understand. Now, feedback and recognition, this is so great as well. So when you're working in an organization with peers and affiliate marketing and building people and teams and supporting people in growing, providing constructive feedback is so super crucial, because if you feel as if something is not working correctly and you find that from experience, for example, building a team in this way is not working for a team member in your team, but you have the guidance, the structure and the longevity of doing it in a way where it's successful, give constructive feedback in a respectful manner to someone in your organization. So just be, obviously recognize their achievements and then say, hey, I think this will work like this because it's worked for me and I've succeeded in it. So acknowledge their growth, give personal feedback with achievements, and provide constructive feedback. It's such a good way to build business, and it's such a healthy way to build any business for that matter. Mr. Fawad, can you still hear me? Yes, yep, I can hear you. We all can hear you. Amazing. This is a really important one as well. Now, this is something that I use in my day-to-day living, whether it's in business or personal development. Introduce mindful practices or meditation sessions to help employees or, business owners manage stress and enhance focus. Now, if someone comes to you today, one of your team members, and says, hey, I've just had my knockback from someone I've showed the business to, and this person, is so, I'm not sure, this person just has hit a roadblock and he's frustrated or she's frustrated and she can't achieve what she set out to achieve and she just not for the business today. This is where you would say, hey, take one moment, take 5 minutes,
Take 10 minutes, listen to something that's going to reframe your subconscious mind. So mindfulness, whether it's prayer, whether it's a meditation, in any religion, in any culture, in anything that brings you to your senses, is what mindfulness is. And it is required in your day-to-day living. So I don't see why you wouldn't put it in your business as a part of your ethical value in growing your business. This is my favorite. If anyone that knows me knows that I never used to pick up a book. I never used to read. I left school. I disliked reading. I had no, courage to pick up a book and read. Now, if you walk into my office, my office is swarmed with books because learning is crucial. I love business. I love building business. Hence why I'm a business development manager with M20. So I've literally gone back and I can speak for myself, gone back to study a bachelor's of international business at this day and age after being successful, because growing is a forever thing. Growing is not, growing and learning is not something that just happens once and stops. It's like a child. When your child is growing, your child's nurturing, they're learning how to walk, they're learning how to eat, they're learning how to talk, they're learning how to communicate. These things are so super crucial and so super important, because you want to be abreast of the latest trends of how to communicate, how to speak to people, how to speak in front of tens of thousands of people. This all comes from growth in learning and then experiencing, and gives you a level of innovation. So create an environment that supports continuous learning, experimentation and innovation, promoting a growth mindset. And a key point that I'd like to stress here is M20, Mether, we're not an organization that is so harsh on how you innovate and build your affiliate. So I just want to remind you that as long as it's within ethics, go out and be creative, go out and be innovative, because if someone needs to know what you have for them. Without you being innovative or creative, they're not going to be able to know. Alrighty. So goal setting. I know we spoke about a roadmap at the start. Goal setting and progress tracking is amazing. I mean, a lot of people on this call make it to success without setting goals. And in any day-to-day living, they achieve certain things without goal setting. However, everyone always reaches the point where goal setting is required, because you end up becoming blurred, with a blurred vision about where to go and where not to go, without putting your goals in black and white or pen and paper. You could be going for years, you could be going for decades, and you still couldn't have achieved anything. So the key point I'd be asking myself is, why haven't I goal set if I haven't goal set to this day? So establish clear business goals and encourage your peers, whether they're in your team, whether they're not in your team, whether they're in your upline, whether they're in your downline. Encourage peers to achieve their personal development goals, because your personal development goals always align with your business development goals. It just balances each other out always. Now, this one's in English. Patience is virtue and knowledge is power. And the reason I just briefly shared this is because we just spoke about learning, personal development, personal growth, and learning new things. Now, these two books that you see on my screen, one is in Offers for Business, which Mether already provides amazing compensation plan. Like, I've seen compensation plans and I've seen other affiliates, because I need to know what's out there. And the compensation plan that Mether has today is one of the best. It's substantial about how amazing it is. And this comes from reading books like this. Alex Hornsey, how he turned one business into many and then sold it and flipped it. This is how you learn offers about how to present the opportunity that you have. The second book, of course, is the Bitcoin Standard, because BTC, digital assets, the cryptocurrency, the whole world of the crypto industry and digital assets industry is still
not where it's going to be in the next 10 years. It's still not where it's going to be in the next 20 years. We're still so early into the BTC market, or the digital asset market. So getting yourself these books, reading these books, understanding these books is crucial to your growth and crucial for your business and for your organization. We can talk so much about this. If everything else in this presentation you didn't understand it and it failed you for whatever reason, that's absolutely fine. The most important thing is the will to never give up. And before I'm continuing, I'd like Mr. Pura just to repeat what I just said. Can you please repeat that the will to never give up in your language? Thank you so much, Miss Eddie. Thank you for your time. We really appreciate your time and effort that you're putting into this. Thank you so much. If you want to close on the final words, then I will explain everything in all. Okay. No worries. So positive reinforcement, develop a system of positive reinforcement, such as, peers or employee recognition programs. So recognize the people that are succeeding. Even if it's a small achievement, recognize them, whether it's on a Zoom call, whether it's via text message, whether it's via phone call. These are so important. This is so important because some people may not need small achievements, but some people still need to be recognized. Whether you find it a necessity or not, take the time out to recognize these people that are achieving, because you will eventually boost their morale and they'll keep going without you having to, always tell them to keep going if you're doing so. So it's really great just to, readdress that. Address negative culture. We don't believe negativity in organizations. We don't believe negativity in anything that we do. If anyone knows me personally, or anyone knows me on a business level, you would know that even if there's some form of negativity, it's always turned into positivity in that instant. So identify and address any aspects of the company culture that may contribute to a negative mindset, fostering a more inclusive and supportive environment. And in closing, I would like to say, personal development opportunities, keep going for personal development, provide opportunities for personal development that empower employees to enhance their skills and their ability and capabilities. So keep plugging them in to, programs and training courses that we will have together. It's a part of our ecosystem, and you'll see personal development opportunities on there. Keep reminding them to go and grow with us. And the second last slide is patience. Patience is a virtue, and I learned patience in my last few years. I was a very impatient person, and I still can be a little bit impatient. However, patience is something that is a virtue. Patience is the key to anything you want to achieve. Anything, whether it's personal, business, with your child, with your relationship, whatever it is, wherever it is, whoever you're speaking to, have a level of patience that is second to none. And if you don't have that patience today, do things to grow your patience, to find your patience, to keep you calm and collected in any industry, especially this industry, because the digital assets industry is not something that grows overnight. Some parts of the industry do, however, they're higher risk. The roadmap and the ecosystem that we have at M20 and Mether is a slow, steady process. Good things take time. If the coin is fluctuating, that is absolutely fine. It's fluctuating for a reason, because if it's only going up, it's going to come so much back down. And this is why I say be patient. We're all in the same industry. We're all doing the same thing. You're not alone. Patience is a virtue. Keep nurturing it. And this is the closing of my presentation. And we all know Steve Jobs. And this quote really related with me. I really like this quote because it says, if you really look closely, most overnight success took a long time. Apple didn't become Apple overnight. Apple became Apple over years, over decades. The same thing with Amazon. Amazon didn't become Amazon overnight. It took decades.
and decades, and it's still taking decades. It hasn't stopped after decades. These organizations still growing. BTC didn't hit 70, 80,000 USD overnight. It took years and years. And when it hit 80,000, it came back to 17,000. And when it hit 17,000, it went back up to 52,000, where we're at today. So these things take time. Be patient, look and understand that your success is not overnight. Nothing is overnight. And I'd like to leave you on that. I'd like to say a very special thank you for everyone being on this call. Mr. Pura, thank you for giving me the time. Thank you so much. I'll hand it all back to you. Thank you. Thank you so much, Ms. Sadie. That was, I think, very, very informative training. आप सभी लोगों को मिस सैडी ने थैंक यू बोला कि आप सभी लोगों ने ये कॉल ज्वाइन की, और मैं इस कॉल की जो मिस सैडी ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, मैं उसकी थोड़ी सी समरी आपके आगे जो है ना वो पेश करूं। वो ये थी कि हमारी जो भी डे टू डे लाइफ है उसके अंदर जो सबसे की चीज प्ले करती है वो पेशेंस करता है, और पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हम सब के अंदर एट टाइम्स उसमें जो है ना वो कमी आती रहती है पेशेंस के अंदर, और इसीलिए हम सम टाइम उस चीज की स्ट्रेस करते हैं जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, कि अगर शायद ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन वो रियलिटी के अंदर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मिस सैडी की जितनी भी ट्रेनिंग थी, जो भी इंफॉर्मेशन मिस सैडी ने शेयर की, वो बेस्ड ऑन माइंडसेट ही थी कि हमें किस तरीके से पॉजिटिविटी माइंड के साथ कोई भी बिजनेस हम बिल्ड करें। हम मीथर की मिसाल दें, M20 की दें, अपनी फैमिली की दें, कोई भी एग्जांपल लें, हमें हर एक चीज में थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखना चाहिए, और वो ही हमारे लिए सक्सेस बनेगी। क्योंकि अगर हम मुश्किल सिचुएशन में या टफ सिचुएशन में पेशेंस नहीं लेके आएंगे अपने अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर, तो इससे हमारे सबके जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हमारी फैमिली के साथ है, हमारे बिजनेस के साथ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, वो सब रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट होंगे सिर्फ उस मोमेंट के लिए, जिसको हम अगर चाहते तो उसको हम इग्नोर कर सकते थे, सिर्फ अपने पेशेंस को यूज करते हुए, अपने सब्र को यूज करते हुए। तो हम सभी को ये जरूरत है कि हम सब इसकी प्रैक्टिस करें, पेशेंस की, सब्र की, कि किस तरीके से टफ सिचुएशन में भी हमने पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस करना है, किस तरीके से हमने मुश्किल वक्त में अपने माइंड को, अपनी टीम्स को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। क्योंकि आप सभी समझते हैं कि ये जितनी भी नेगेटिविटी है, 90% नेगेटिविटी सिर्फ हमारे माइंड में ही प्रोड्यूस होती है। और मिस सैडी ने ये भी कहा कि हमारा जो माइंड है, ह्यूमन जो नेचर है, हमारी इंसान की जो फितरत है, वो हम सबसे पहले नेगेटिव सोच की तरफ सोच जाएगी। अगर कोई भी शख्स आपको, हम बिजनेस की बात ना भी करें, अगर कोई सेल्समैन, अगर आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो कोई सेल्समैन अगर आपको कोई चीज सेल करने जाएगा तो हम सबसे पहले उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि शायद अगर ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसलिए ह्यूमन माइंड जो बना, ह्यूमन ब्रेन जो बना, इंसान का सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स लेके आता है, उसके बाद पॉजिटिव को सोचता है। तो हमने कॉन्शियसली, हमने अपने हिंदी में कहते हैं कि आंखें खोल के, होशो हवास के अंदर रह के, हर सिचुएशन के अंदर पेशेंस को यूज करके जो भी स्टेप उठाएं, पेशेंस रखें। ओवरनाइट चीजें नहीं होंगी, ये दुनिया का ये जो सिस्टमैटिकली नहीं प्रूवन, ये हो नहीं सकता कि हम कोई भी काम करना चाहें, चाहे आप अपना नया घर बनाना चाहें, चाहे आप अपने नई गाड़ी लेना चाहें, चाहे आप हॉलिडे ट्रिप प्लान करें, चाहे आप शादी करना चाहें, चाहे आप कोई भी काम करना चाहें, ये ओवरनाइट प्लान्स नहीं है। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजों में वक्त लगेगा। और वो वक्त की मिसाल उन्होंने ऐसे जोड़ी कि एप्पल की मिसाल दी कि अगर एप्पल आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो यूनिवर्सली वेल रिनाउंड ब्रांड है, वो एक रात ओवरनाइट में नहीं बना, और हम सब इसी को जानते हैं। इसी तरीके से अगर मीथर की मिसाल दी, अगर M20 की मिसाल दें, तो ये एक इतना बड़ा ब्रांड, ये ओवरनाइट नहीं बना, इसको बनते 4 साल की अनथक मेहनत है सभी लीडर्स की, और हमारी मैनेजमेंट की, जो ग्राउंड फील्ड में लीडर्स हैं वो भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। हमारे साथ में सतार हुसैन है, वो भी दिन रात में हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। मिस्टर साजवान जी हैं, अनुराग गेरा जी हैं, उनके साथ साथ जितने भी स्पार्टन्स लीडर्स हैं, उसके बाद हमारे पास जो डायमंड लीडर्स हैं, जो हमारे पास क्राउन एम्बेसडर्स हैं,
एम्बेसडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, आप सबकी दिन रात की वो जो मेहनत इकट्ठी होके आई है, उसकी वजह से ये कंपनी सक्सेसफुल हुई। और आगे भी आने वाले 10 साल 20 साल में ये कंपनी एक लंबा चलेगी, क्योंकि जब मिसाइल ने बोला कि जब आपकी इंटेंशंस क्लियर है, जब आपकी सोच सीधी है और बिल्कुल साफ है, तो कामयाबी फिर ऑफ कोर्स आपका पीछा करेगी, क्योंकि आपकी इंटेंशंस और आपकी डायरेक्शंस क्लियर है। सो आई थिंक मिस सैडी की तरफ से ये हमारे लिए एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी थी, और हम सब के लिए नॉलेज भी थी कि उन्होंने हमसे इतनी डिटेल के अंदर ये सक्सेस का जो फॉर्मूला, जो सक्सेस का सीक्रेट शेयर किया कि पेशेंस। तो अगर मैं मिस सेडी की सारी ट्रेनिंग को अगर सम अप करूं, अगर उसको मैं एक सर्कल में लेके आऊं, तो सिर्फ हमने सब्र से काम लेना है, पेशेंस से। क्योंकि देखिए, अगर हम पेशेंस लूज कर जाएंगे तो फिर हम बहुत कुछ नुकसान करेंगे, ना सिर्फ बिजनेस के अंदर, फैमिली मैटर्स के अंदर, अपने फैमिलीज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। इसी तरीके से जो जो भी हमारी लाइफ का जो डेली सर्कल है वो हमें इफेक्ट करेगा, बच्चों के साथ। तो हमने पेशेंस को अपने हाथ में रखना है। कोई भी डिफिकल्ट टाइम आए, डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तो हमने पेशेंस से काम लेना है और सक्सेस हमारे साथ रहेगी। सो थैंक यू सो मच मिस सेडी। आई ट्राई टू use word by word what you said and try to come in full circle. Now I'm going to invite the other speaker before I go to the main person in the room. She is again a very amazing lady. Women's power in this house. She is someone that working with us from Europe. A very, very interesting lady, and she's building a very strong and huge organization in Europe. And I'm so proud, I'm so lucky that she's working with us, and she's building a very, very good and strong organization. So I think, she is already joined us on the call. Miss Elena, can you hear me? You can hear me? Yes, okay. I can hear you. So, without further delay, everyone, ladies and gentlemen, we have our very top leader from Europe. Right now, she's holding a position of diamond, but I think she's a real diamond, because the way you're building the business and the way you are growing, I'm super excited. Please tell us how, what would you say about mCoin price? mCoin price is $1. We have seen at $3. What people are saying in Europe about the whole project, about the company, and what do you think? Please share the experience. Hi everyone, good evening. Thank you for giving me the opportunity to speak today. So, how's everything going in Europe? To be honest with you, it's just crazy what's happening right now in Europe. I have this because I am doing the translation. My team right now is listening to this training, and we are building a really huge, massive organization in Europe. I've just checked before this Zoom call how many countries there is in Europe. There is 50 countries. Can you imagine? We are right now working in France, UK, Belgium, Italy, Germany. Some more are coming, and all the team is so excited in developing this project in all over Europe. And some people even from Africa also join us. So regarding the price of mCoin right now, when I joined the company, the price of mCoin was around 70 cents. It was just, wow, I feel lucky. I feel lucky because, I knew that it coin under $1. And it went up to almost $3. And then right now it's around $1. What, in my experience in crypto industry, and what I think, and all the people in Europe, we think it is an opportunity that today the price of mCoin is at $1, because it's something totally normal. You all know the story of Bitcoin. It started from 10 cents to 73,000, then it went back under 5,000, and right now it's around 50,000. So this is something totally normal. You just have to take advantage of the price right now. It's really the time to buy mCoins. And in Europe, we understand that, and we are very excited about it. So we are building really a massive organization right now. So just in order to finish on this Zoom call right now, I am in Dubai. I'm still in Dubai. I leave Dubai in 2 days because all my team,
They are waiting for me. They want me to be there. We are going to organize a tour in all Europe. And I know that Forward will be there in a few days with Mr. DENIS as well. And we will share that information to all of you. So we attend with some people, some leaders from Europe. We attend the event at Bush Al Arab a few days ago. It was just amazing event. And just to finish, you know, when I joined Mether, there was just a few products available, and it was just the beginning of, you know, of all this. Today, everything is there. Absolutely everything is there. We've got, you know, the M20 blockchain. We got the Launchpad, the crypto lab, the academy, the metaverse. This is so amazing. This is just so crazy. So we are just at the right beginning of the story of Mether. Thank you, everyone. Thank you, Forward, for giving me the opportunity to speak, and see you very soon. Bye-bye. Thank you so much, Elena. I'm going to quickly translate in Hindi so everyone, we all on the same page. So thank you so much. Keep inspiring us. Keep going. Keep working hard. We love you. Thank you so much. ओके तो मिस एलिना जो कि इस टाइम के ऊपर यूरोप में एक बड़ी अच्छी और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हैं, उनको जो उन्होंने हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की यूरोप के अंदर कि हमारी जो टीम्स यूरोप में ग्रो हो रही हैं वो कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्होंने जब mCoin बाय किया था तो उस वक्त मिस एलिना ने कहा कि जब मैंने बाय किया तो उस वक्त 70 सेंट का था, और आज जब मेरे देखते देखते ये $3 के ऊपर गया और दोबारा $1 पे आया। लेकिन हम जिस तरीके से, जिस अपॉर्चुनिटी से लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मेन आइडिया यही है कि हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक दोबारा से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम दोबारा जो mCoin है वो $1 या अंडर $1 हम बाय कर पाए। तो उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो कि अब मीथर आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इंटरनेशनली, और आप सभी ने देखा कि हम ना सिर्फ एक कंट्री में, एक रीजन में, बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड बन के निकले। और सभी लोग जो स्पेशली जो लोगों ने मीथर शुरू से स्टार्ट किया, बिल्कुल शुरू से 20 सेंट से, 30 सेंट से, 40 सेंट से, वो तो एक्साइटेड है ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने $2 पे, $3 पे भी mCoin बाय किया, वो उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं कि अब उनको समझ आ गया कि अगर mCoin लास्ट चांस है हम सबके पास, हम उसको बाय करें, अंडर $1 बाय करें, $1 पे बाय करें, क्योंकि जो मीथर ने इकोसिस्टम दे दिया, M20 चेन ने इकोसिस्टम दे दिया, अब ये ऑब्वियस है, अब ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अब प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये थी हमारी प्यारी मिस एलिना, और जो कि यूरोप में एक टूर करने हम जा रहे हैं, मिस्टर डेनिस और मैं और हम आपसे पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो ओके, thank you so much once again, Elena. Now I will head back to our final speaker. The main person, the main person for our project, the brain behind our project, and the person who always give us some great ideas, the person who's always ahead of his game. I love him so much. I mean, I have so much respect for him because he has a very busy schedule and he is still always available. You call him, you text him, he is there for you. And I love him from literally bottom of my heart. I want to say this in Hindi. So अब हमारी कंपनी के जो CEO हैं, हम बहुत ही लकी हैं, आप सभी लोग लकी हैं कि हमारे जो CEO हैं वो इस कंपनी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और फ्रंट से लीड करने का मकसद ये है कि आप सभी के पास जो अमेजिंग ऑफर्स आती हैं, आप सभी के पास जो अमेजिंग मैसेजेस आते हैं, आप सभी के पास जो अमेजिंग इंफॉर्मेशंस आती हैं, वो इनसे ही निकल के आती हैं। तो हमारे लिए बड़ी एक लकी बात है, हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कंपनी के जो लीडर्स हैं, जो हमारी कंपनी को जो चलाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो टाइम अहेड चलते हैं, जो अपने टाइम से पहले ही चलते हैं और हमें आने वाले जो इश्यूज हैं उससे हमें आगाह रखते हैं, हमें अप टू डेट रखते हैं कि हमने अब कौन सा मूव किस टाइम पे करना है। सो आई थिंक ये अपने आप के अंदर एक जीनियस बात है। आप सभी इंडिया में इनसे मिले भी, और आज क्योंकि इनके पास एक हम सब के लिए बहुत ही अच्छी एक्साइटिंग न्यूज़ है
सो मैं डिले के बगैर इनको माइक इनके हवाले करूंगा, और जब ये खत्म कर देंगे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना, मैं आपको हिंदी में उसका एक समअप दे दूंगा. सो विदाउट फर्दर डिले, could you please welcome the one and only CEO of Mether, Mr. DENIS SHEHU. Sir, hand over to you. Thank you. Can everybody hear me? Loud and clear, sir. Perfect. So, bonjour, hello, assalamu alaikum, namaste to everyone in this call. Very nice, Mr. Fava. Thank you for the introduction every time. A pleasure to be here. And also thanks to the speakers before. Ladies, you did an amazing job in the past until today. Thank you for that. And I hope you liked the content and the input from our ladies and from Mr. Fawad as our translator and host today. But I'm here not to give you any kind of motivational content. I'm not here to give you any kind of things that are non-business related. I'm here to give you what's coming for 2024 and what you can expect from us as a company. And I don't want to waste too much time. I will share quickly my screen with you. I hope everybody can see now my screen. Is that right? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So for everyone who doesn't know me, I'm DENIS SHEHU, CEO of M20 Blockchain and Mether. And today, as I said, I'm going to share with you the 2024 overview. And you've heard many times what we've did in the past and what we did the past couple of years. So I don't want to bother you with that again. I'm going to jump directly into, what we're going to do from now on. And the first topic is Metherize, our own metaverse connected with the metaverse token. We will create the M20 token lab, the M20 DEX, and last but not least, the M20 cards. And I'm gonna start with the Metherize metaverse. The initial land offering will be very soon for you guys, so you will be able to purchase your own land within this metaverse. And then, as you can see on my slide, you can connect with business-minded people or just with people who want to enjoy their metaverse with concerts, sport activities, and as you can see here, some fashion shows. But you can also attend your Zoom meeting within the metaverse, for example. And the token connected to the metaverse will be launched at the Token 2049 in Dubai in April, but later on to this event. The token lab is something that is very productive for you out there, not for us, because this gives you the opportunity, if you have, for example, your own business or your own project and you want to launch it on our blockchain, you can do this within a couple minutes and without any kind of coding skills, as it says here on the presentation, because you just type in the things that we're gonna ask you for in the form and you pay some gas fees to the blockchain and create your own token on the blockchain. And this will be all possible with the token lab that we're gonna launch. So this is something very useful for you guys out there and for everyone who want to start their own. M20 DEX, you've heard before about it. It will be launched this year, this or next quarter, and it is something that is very necessary for this kind of industry and market. It is a decentralized exchange, so no third party in between your assets. It is just people to people and they swap the assets. And as you can see, there is no QIC. You just connect your funds, your wallet, as you know it maybe from other platforms and you've did it in the past sometimes. You just connect your wallet, your assets, you swap it, and this will also be able on the M20 DEX. And this is something that I'm very proud of, to be honest. This is something that if you don't use it, I'm gonna use it the most, because it is a M20 card. It is a crypto card where you can
on and off ramp with your assets. That means that you can go with fiat inside and outside of your account, and it is not a typical card, as I said, so you will be able to do both things and connect it to Apple Pay or whatever device you're using. You can pay with this card internationally. You can top it up with your top 15 cryptos, I think, somewhere within top 15 cryptos worldwide, and obviously with your mCoins. This card will be in the next couple weeks available in digital form, so you can get the card in digital form, as you may know it from other cards or your own bank card, for example. You can connect it to your device or use it for online purchases. The physical card will come later on as we're waiting for the cards from MasterCard. The next point is here also explained, the card. I think you can see the slide now. Yes. So you can spend your crypto everywhere. You can trade your cryptos, you can pay with crypto, and you will have it, as I said, virtually and physically. Kleos is something where we want to step into different industries, into different markets. And as it says here on our website of Kleos, Forex, e-commerce and AI, with Kleos, you will be able to learn these skills and get coached by professionals who are not only professionals, but who have the passion for the industry, who have the passion for whatever they're teaching there, and they will coach you and guide you with their mindset skills, with their skills of their own industry, what they're in. And this will all be available in Kleos. This will also be launched within 2024. And this is also a good product for people who say, okay, let's say I'm gonna go into crypto, but it's not 100% my passion. I wanna go and learn Forex trading, and the profits that I make with Forex, I'm gonna push them into crypto, for example. So this is a very good tool for everyone who wanna go outside of crypto as well. And here you can see the website from Token 2049 for the people who have been in Singapore with us. They have seen what we've done in Singapore, so thanks again for that. But this year, Token 2049 will be in Dubai, and you can see we are one of the main sponsors. We are gold rank of the sponsors with some other big companies within the Web3 space. As you can see, our logo M20 chain, and we will be there again with our team, with more of our team members, with more of our employees, myself, all the leaders out there should join, and you will have, as you've seen in this flyer before, you will have a great opportunity to take yourself to the venue, to the place in front of the M20 stand. And I'm really waiting for everyone there, because events like we did it in India and in Europe are very nice, but here we really connect with the people. We get into deeper conversations, and all these things that you have seen the past 6 months, and what I said to you and showed you right now, the past 5 minutes, these things were only possible because of Token 2049 in Singapore. We attracted so much outside community, and all these people tried. Sometimes they tried, and as you can see, sometimes it went successful as we developed new things, and this was only possible with events like Token 2049. So get yourself there, do your best, and join us at this event in April in Dubai. And before I'm gonna end this presentation, I wanna go into something. And as you can see, crypto is a hodl game. So for the people who are in the market like myself or Mr. Fawad or some other leaders that I talk to, this might not be something interesting because they know it. But for a lot of people who went new into crypto, it is something that they may ask, okay, what does it mean for exactly? So
in crypto, it is very, very, let's say, important that you hold your assets. It's not something, maybe if you're a professional day trader, do your best, try your best, but in crypto, it is about your patience and your passion to the market and to understand the market with the most knowledge. So you should hold your assets. And I really got often some messages on my social media platforms or on our company's social media platforms, some comments, some direct messages. And Mr. Tahir, Mr. Fawad gave me some news from you guys, from the market out there, and they told me that some of you are worried, or some of you are depressed, or some of you are scared of the market situation. And I want to tell you one thing. I think it was mentioned before also. This is something very normal. This is something where you should be in a side excited, because I'm going to explain it quickly. If you see the mCoin price from $3 going down to 80 cents, for example, these are, first of all, people who realize their profits. Because let's say you've joined us from beginning on and you bought mCoin at 10 cents. So you would be glad to realize some of your profits at $3. And then obviously that's the market's behavior in every kind of project, that people who come after one big sell, after one big sell candle, they are panic selling. So this is also a part why the price went down. But here in this slide, you can see, for example, the comparison to Matic. And if we look at Matic from 2019, 2020 onwards until 2021, nothing happened with the price. Then it went up, it exploded within a couple of months to almost $3, $2.50. And then it went again down, let's say 50, 60, 80%. So it is very typical, very normal. And the same thing, I think Miss Alina said it before, to Bitcoin, it was a roller coaster. It went from, when we bought it, from $100 to 20,000, then down to 2,000, then up to 20, 50, 70,000. Then it went down to 15, and now it's up to 50 again. So this is something very normal out in the market, and it is nothing that you should be scared about, because I explained it in Dubai in our last meeting to the leaders. The company is here. We are working outside in the market. We are developing products and projects. The whole team is here. You can meet them at events. The coin is still online everywhere, and we are waiting for new listings, because this is the last chance for you guys. And I'm telling you, to get it at this level under $1, because at the event in April, we will announce new central exchange listings. And in my opinion, this is the very last chance to get it at $1, because afterwards, when the big volumes come in, when the attraction of markets outside of our community will come in, this will not be a price that you will see for a long time. It will be just a short period under $1. And mCoin is going to hit all-time high by the end of the year with the things that we're going to launch the next couple of months. And why I'm saying this, it's not just because I believe in my own project, because I believe in my own products and skills and my team. It is because if you go outside just on the news page and type in crypto 2024, you will get articles like this. And this gives me, and I think everyone who's longer in this market for longer than, let's say now 5 years, they will have the same feeling. It's the feeling like 2017, where the news pumped up of crypto, where Bitcoin was in many news channels, in the television, on social media, everywhere, and everywhere was Bitcoin, crypto. Same thing is happening now, and here are some screenshots of articles. So even
when the Bitcoin ETF was announced, not that many people were attracted to the ETF, but into crypto. You can see how many things pumped up since the news. So this is a very, very good year for you guys to go all in to crypto with your passion, with your knowledge, and with your time and energy, because in the end, I think this is the best thing that you can do in 2024, to go into Web3 and crypto a step deeper than normal, because the market is shaking. So thank you from my side. I hope everyone understood as far as they could for now. Mr. Fawad, I want to give back to you to translate it into Hindi, so that the people in India and other countries out there will also get the message and understand what we're delivering. And sure. Thank you very much from my side. Thank you so much, Mr. Denis. If you can stop sharing your screen so I can share my screen, sir. Yes, I'm very perfect. Sorry, yes. Thank you. Thank you so much, Mr. Denis. So, आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉल थोड़ी सी जो है ना वो लेंथी हो चुकी है, तो जो मिस्टर दनीश ने हमें अनाउंसमेंट्स दी, जो अमेजिंग अनाउंसमेंट्स दी, कुछ का तो ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन थी, आपको आपकी अपलाइंस ने, आपकी लीडर्स ने इन्फॉर्म किया था, और कुछ मैं आपको अभी अनाउंस करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए, देखिए आप सभी के जो ज़हन के अंदर या दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं जो कि एक डर और फियर जो चल रहा है, जो हम मेरे तक स्पार्टन्स ने इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचाते हैं, और मैं मिस्टर डनीस के साथ और बाकी मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करते हैं, और इसी तरीके से मिस्टर ताहिर हुसैन जैसा कि कंसिस्टेंटली सभी लीडर्स के साथ, स्पार्टन्स के साथ रेगुलर जूम कॉल्स कर रहे हैं। तो वो जूम कॉल करने का मकसद ये है कि आप सभी को अप टू डेट रखा जाए कंपनी की न्यू इन्हांसमेंट से, कंपनी की ग्रोथ से। और इन कॉल्स करने का मकसद क्या है? इन कॉल करने का मकसद ये है कि देखिए, जो प्रोजेक्ट ग्रोथ में होता है वो ही लॉन्ग टाइम चलता है, और आप सभी के लिए ये एक गुड न्यूज़ है, ये गुड साइन है कि आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। आप सबने देखा मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट भी आए, जो साल चले, 2 साल चले, बहुत हाथ हुई तो 2-2.5 साल चले, 3 साल चल गए और बाद में बंद हुए। क्योंकि उनकी ग्रोथ उस लेवल की नहीं थी कि जिस लेवल की ग्रोथ हमने की, ना सिर्फ टीम बिल्डिंग में बल्कि प्रोडक्ट और एनहांसमेंट्स में, कंपनी की ग्रोथ में। तो यही वजह है कि आज हमारे सीईओ हमारे प्रोजेक्ट को मैटिक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और उसकी रीजन ये है कि हमारी जो टीम है, जो ब्रेन है बिहाइंड हमारे पूरे प्रोजेक्ट का, वो एक ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि उनको ये समझ आ गया कि 4 साल के बाद, 4 साल सक्सेसफुल कंपनी को रन करने के बाद आज हम उस लेवल पे खड़े हैं जहां हमारे लिए बहुत ही आसान है कि कंपनी के अंदर कोई भी वीसीज आके इन्वेस्ट करे। वीसीज बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को, जो बड़े बड़े, क्या हम बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे तो मगरमच्छ बोलेंगे या क्रोकोडाइल्स बोलेंगे, जो कि हमारी जैसी कंपनीज में 50 मिलियन, 20 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन मिस्टर दनीश ने और बाकी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि हम जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, हम सबसे पहले हम अपने मथेरियल्स के सामने रखेंगे, हम अपनी टीम्स के सामने रखेंगे वो अपॉर्चुनिटी। जब वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद ही ये डोर्स बाकी पब्लिक के लिए खोले जाएंगे। तो आई थिंक ये ऑनेस्टी है हमारी टीम्स की, हमारी मैनेजमेंट की, हमारे लोगों के साथ, कि उन्होंने हम सब पे ट्रस्ट किया और हम सबको ये प्लेटफॉर्म दिया, और जिसको ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि आज इस साल जो बड़े स्टेप्स कंपनी उठा चुकी है ऑलरेडी, अब तो वो कंप्लीशन की तरफ पहुंच गए हैं, अब तो वो प्रोजेक्ट खत्म होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हमारा मेटाराइज, जो कि मेटावर्स का प्रोजेक्ट था, जिसको लगभग हम पिछले 6 माह से फुली प्रमोट, फुली फोकसली मीटिंग्स में भी डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि अब ये मेटावर्स जो हमारा
प्रोजेक्ट है ये आप सभी को टोकन 2049 जो कि अब से लगभग 2 माह दूर है, बल्कि 2 माह से भी कम टाइम में जो इवेंट आएगा उसमें हमें ये प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा और हम अपना मेटावर्स भी हमारे पास एक्सेस होगी। उसी के साथ हमारे पास मेटावर्स का टोकन जो कि मेटावर्स का नेटिव टोकन होगा और वो भी आपके पास एक्सेस होगी। और जिन लोगों ने mCoin को ग्रो होते हुए देखा, 10 सेंट से $3 तक की जर्नी देखी, आप सभी लोग समझते हैं कि वो जर्नी थी जब कंपनी नई थी। अब की जर्नी और उसकी जर्नी में जमीन आसमान का डिफरेंस रहेगा। अब की जर्नी में ये 3 मिलियन लोग इसको पुश करेंगे। उस जर्नी में सिर्फ चंद लोग थे जो हमारे साथ शुरू में जुड़े। उसके बाद टोकन लैब जो कि कंपनी ने इस साल लॉन्च की, उसके अलावा M20 डेक्स और इसी तरीके से हमारे पास M कार्ड जो कि आप सभी के पास अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले मिस्टर डेनिस ने हमसे ये शेयर किया कि वर्चुअल लैंड, अगर तो आप सभी लोग थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लें और YouTube पे जब भी आपको टाइम मिले और आप देखें फेसबुक मेटा, सिर्फ लिखिए फेसबुक मेटा, तो जो फेसबुक के मालिक हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, उन्होंने एक पूरी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया। पहले हमें लगता था कि शायद ये बहुत दूर है, मेटावर्स शायद बहुत सालों बाद आएगा, लेकिन क्या हुआ कि एप्पल ने, आप सभी के पास एप्पल का फोन है, एप्पल ने जो अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को अगर आप देखें, ठीक है, कि वो एक ऐसी इनोवेशन जो कि आप मेटावर्स में आप ग्लासेस डालेंगे, विजन प्रो जिसका नाम रखा गया, वो आप ग्लासेस डालेंगे और आप पूरा मेटावर्स उसके अंदर आप देख पाएंगे। ये है मेटावर्स की फर्स्ट जनरेशन। और जिस पे मीथर M20 काम कर रही है वो है मेटावर्स की सेकेंड और थर्ड जनरेशन। सो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि मीथर पूरी दुनिया के साथ ताकत रखती है मैच करने में, टेक्नोलॉजी के अंदर, विजुअलाइजेशंस के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, रोड मैप क्लियर हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट कंसिस्टेंटली ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और वर्चुअल लैंड अवेलेबल होगा आप सभी के लिए और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप सभी लोग अपना mCoin यूज कर पाएं और अपना mCoin यूज करके ये वर्चुअल लैंड परचेज कर पाएं। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इस पे बात चल रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ ताकि इसको हम इस तरीके से लॉन्च करें कि आप अपना mCoin भी वर्चुअल लैंड के अंदर यूज कर सकें। और वर्चुअल लैंड एक दुनिया है, आप जो काम भी इस दुनिया में, आप जिस कंट्री में भी हैं, जिस शहर में भी मौजूद हैं, जो काम आप वहां पे कर सकते हैं, बिजनेस एरिया, बोर्ड रूम, NFT, रियल एस्टेट, कोई काम, स्पोर्ट्स अरीना, फैशन वीक, आप जो काम अभी दुनिया में कर रहे हैं, आप ये सब काम को हम लेके जाएंगे मेटावर्स में। ना सिर्फ हम, अब इसमें मीथर की बात नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड वाइड जितनी बड़ी जो AI कंपनीज हैं, जितनी बड़ी मेटावर्स की कंपनीज हैं, वो सभी इसी डायरेक्शन में मूव हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग लकी भी हैं और आप सभी लोग फॉर्चून भी हैं कि आप भी उस अपॉर्चुनिटी का, उस कंपनी का हिस्सा बने कि जो इन प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस किए हुए हैं और हमें वो प्लेटफॉर्म दिया गया है। अच्छा, अब टोकन लैब क्या रहेगा? टोकन लैब इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि आप सभी के पास एक्सेस हो। आज हमारे ऑलमोस्ट 3 मिलियन यूजर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं मीथर के ऊपर। तो आप सभी ने अगर अपना टोकन बनाना है, अपना कॉइन बनाना चाहें या अपना टोकन लॉन्च करना चाहें या अगर आप अपना टेस्ट करना चाहें, तो आपको कोई IT का बंदा नहीं चाहिए, कोई आपको जो कोडिंग करे ब्लॉकचेन के ऊपर वो बंदा नहीं चाहिए। हमने वो प्लेटफॉर्म दे दिया आपको कि आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, अपना टिकर नेम सेलेक्ट कीजिए और विद इन 5 मिनट आप अपना टोकन बना लीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि ये कितनी जॉब आसान कर दी M20 मीथर ने दुनिया के लिए। अब ये सिर्फ मीथेरियंस के लिए नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ताकि दुनिया में कोई भी जाए। और आप देखिएगा जो लोग टोकन 2049 में पार्टिसिपेट करेंगे, आप देखिएगा कि टोकन लैब के ऊपर हम कितने लोगों का इंटरेस्ट पीक करेंगे, हम कितने लोगों को लेके आएंगे, कितने लोग एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है
जिसमें लोग पहले सोचते थे टोकन लॉन्च करने से पहले कि हम टीम कहाँ से हायर करेंगे, ब्लॉकचेन डेवलपर कहाँ से आएंगे, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन M20 ने, मीथर ने आपके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म दे दिया आप सबके लिए और दुनिया के लिए, ताकि कोई भी इसको यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। M20 डेक्स ऐसे ही है जैसे एक जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जैसे मेटामास्क कह ले, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट कह लीजिए। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है जिसके ऊपर आपको केवाईसी की जरूरत नहीं रहती, आप सिक्योरिटी एनहेंस रहती है। तो ये सब आपके लिए जो भी कंपनी स्टेप उठा रही है, आप समझते हैं कि क्रिप्टो में हैकिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है पास्ट के अंदर, तो मीथर अपनी तरफ से हर वो स्टेप उठा रही है जिससे मीथर आपको भी सिक्योर रखे, अपने यूजर्स को भी, अपने यूजर्स के एसेट्स को भी और कंपनी को भी। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके। अब एम कार्ड, अगेन इस प्रोडक्ट को भी आप पिछले कुछ माह से सुनते चले आ रहे हैं, एम कार्ड हमारा आएगा। तो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि एम कार्ड अब आप अपनी फाइनल स्टेजेस में पहुंच गया है। अब देखिए, जो भी ये क्वेश्चंस अपनी अपलायंस को कर रहे हैं, ये शायद आपकी अपलायंस का ही ये क्वेश्चन हो कंपनी को कि सर हम तो बड़े अरसे से ये सुन रहे हैं, लेकिन ये कब आएगा, ये कब होगा, हम वेट कर रहे हैं। आप एक बात को समझिएगा, ये सिर्फ एक क्रिप्टो कार्ड नहीं है, ये फिएट कार्ड भी है। अगर तो सिर्फ क्रिप्टो कार्ड हो फिर तो इसमें मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इसको अंदर कंपनी ने कंपल्सरी किया फिएट ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प। आप अपने पैसा डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि हम मास्टर कार्ड, जो कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड होगा, मास्टर कार्ड होगा, वीजा कार्ड होगा, अब आपका सर्विस प्रोवाइडर ये ही 3 कंपनीज रहेंगी। अगर कोई आपको इश्यू बनता है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप फोन करते हैं उन कंपनीज को, मेरे कार्ड से पेमेंट चली गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप उनको बताते हैं। अब यहाँ पे भी वो ही सीन रहेगा, क्योंकि अब हमने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं मास्टर कार्ड के, उसमें ही डिले है। कंपनी की तरफ से, मीथर की तरफ से सब डॉक्यूमेंटेशंस पूरे, सारी चीजें पूरी, और जो लोग बुर्ज अल अरब आए उन्होंने कार्ड का सैंपल भी देख लिया विद मीथर लोगो, ठीक है। अब जो चीज मिसिंग है वो सिर्फ लैक ऑफ डायरेक्शन है हमें मास्टर कार्ड की तरफ से। अब सब चीजें कंप्लीट हैं, हम सिर्फ कुछ चीजों का वेट कर रहे हैं मास्टर कार्ड की तरफ से। जो ही हमें वो गो हेड देंगे, हम अपने यूजर्स को स्ट्रेट अवे वो अवेलेबल करेंगे। तो हमने एक डेट दे दी, जैसा कि मिस्टर दनीश ने कहा कि हम टोकन 2049 को जहन में रख के चलेंगे कि टोकन 2049 तक हमारे कार्ड अवेलेबल होंगे। और मिस्टर दनीश ने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये उससे पहले पहले हो जाए। हाउएवर, हम इसको डेट अगर कोई बंदा पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी टेक्स्ट करते हैं, स्पार्टन्स को भी करते हैं और इसी तरीके से तायर भाई को भी करते हैं कि कब कार्ड कब आ रहा है, हम वेट कर रहे हैं, हम आपने कहा था कार्ड तब आ जाएगा, आपने कहा था कार्ड आज आ जाएगा। तो इस बात को समझिएगा कि ये अगर तो मीथर के अपना ही हो और मास्टर कार्ड की बैकिंग ना हो, फिर तो ये कल आपको मिल जाए, क्योंकि हमने अब ये, जब मास्टर कार्ड आएगा तो फिर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, जब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी तो फिर उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे जिनको हमें फॉलो करके ही कोई भी स्टेप उठाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जिसको कंपनी ने ऑन किया और लिया, और विद इन लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं मास्टर कार्ड की, उसको सबसे पहले रखते हुए ही इसके ऊपर काम जारी है, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, पे विद क्रिप्टो और वर्चुअल और फिजिकल कार्ड, ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो मैंने डिटेल में पहले ही बता दिया। अच्छा, अब जो लोग तो बुर्ज अल अरब आए और जिन लोगों की मीटिंग हो गई अपनी अपलाइन के साथ, उनको ये समझ आ गया कि कंपनी आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा रही है। उसका मकसद क्या है? देखिए, ज्यों ज्यों कंपनी बड़ी होती जाएगी, अब मैं एग्जांपल देता हूं सोलानो के। अगर सोलानो को आप एग्जांपल लें तो सोलानो ने किस तरीके से बूस्ट किया, हमने देखा पिछले बुल रन में 250 का मार्क क्रॉस किया, और बाद में जब FTX का मसला बना, और किस तरीके से एक टाइम ये था कि लोग ये कह रहे थे कि सोलानो बस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि FTX की सबसे ज्यादा होल्डिंग थी सोलानो के अंदर। अब हमने रिसेंटली देखा जो ही बिटकॉइन की ETF आई वो दोबारा बूस्ट करना स्टार्ट हुआ। क्यों?
अगर आपके पास टाइम हो तो देखिएगा कि सोलानो के कितने इकोसिस्टम्स हैं। सोलानो के लगभग 100 इकोसिस्टम्स हैं जिसके ऊपर वो पूरी फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल किए हुए है, और इसीलिए वो इतना बड़ा ग्रो हुआ है। और इतने बड़े हिकअप के बाद, इतने बड़े क्या कहेंगे कि इतने बड़े इशू के बाद दोबारा वो स्टैंड हो गया अपने पैरों के ऊपर। इसीलिए मीथर ने ये डिसाइड किया और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने इकोसिस्टम के ऊपर नई से नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, ताकि आप सबके लिए, लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे कि जिस पे वो कंसिस्टेंटली ग्रो करें और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें। आप इसको इस तरह देखिएगा, जैसे क्लियोस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग कोशिश ये करते हैं कि आप भी कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब देख लें जहां से आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ भी हो और सीखने को भी कुछ नया मिले। अब देखिए, हमने वो प्लेटफॉर्म ही लॉन्च कर दिया जिसमें लाइव कोचिंग रहेगी और हिंदी लैंग्वेज में। हमारे पास जो एजुकेटर रहेंगे वो ना सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और जिस जिस कंट्री में हम एक्सपेंड करेंगे हम उस लोकल लैंग्वेज का ही एजुकेटर हायर करेंगे, ताकि सीखने में और समझने में कोई मुश्किल ना रहे। आपको एग्जैक्टली पता चले कि आप क्या बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, और सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, क्लियोस का नाम दिया गया, कि इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। और मुझे एक बात का पता है, जब हम मिलते हैं, आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, कि आप सभी लोगों को ट्रेडिंग का बहुत शौक है, और जिन लोगों को नहीं है वो लोग हैं जो अपना नुकसान करके बैठ चुके हैं। आप बोलेंगे अब हमने तौबा कर लिया, आज के बाद हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये एक वो वाहिद चीज है जो आपको हर 2-3 माह बाद तंग करेगी कि नहीं तुम करो, नहीं तुम। ये एक ऐसी मीठी ड्रग है, जिनको लग गई है वो खत्म नहीं होगी। उनके लिए हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म एजुकेटर्स के साथ लॉन्च कर दिया कि कम से कम अगर जो करना चाहें वो एजुकेशन लेके करें, वो समझ के करें कि वो कर क्या रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्लियोस का लेके, जिसमें पहले फेज में सिर्फ फॉरेक्स को फोकस किया गया। आप समझते हैं फॉरेक्स $5 ट्रिलियन से अबव, कुछ लोग कहते हैं $7 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन के एसेट्स डेली ट्रेड हो रहे हैं उसके ऊपर। तो ये एक बड़ा अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म रहेगा जिसको हम यूज करके एक साइड इनकम भी ग्रो कर सकते हैं। और हम काफी लोगों के अप्रोच करने के बाद, लीडर्स की सजेशन के बाद इसको हमने लॉन्च किया। और सबसे बड़ी न्यूज ऑफ द डे ये थी कि हमारा जो टोकन 2049 हो रहा है उसके अंदर हम गोल्ड पार्टनर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल कॉइन स्टोर के नीचे आप देख सकते हैं एम चेन, आपका प्रोजेक्ट M20 चेन वहां पे होगा। जो लोग सिंगापुर आए आपने देखा, जो लोग सिंगापुर नहीं आ सके, ये आपके लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब आप आएंगे कैसे? आप टोकन 2049 जो दुबई में होने जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी ने आपको एक पैकेज बना दिया। अब आपके पास एक पैकेज है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक आइडिया है, एक डायरेक्शन है कि अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम अपना सेल्फ पैकेज बाय कर लें, 10,800 का बाय कर लें, 27,000 का बाय कर लें, 54,000 का बाय कर लें, या $1,00,000 का, या तो अपना पैकेज बाय कर लें। नहीं तो हम अचीव रैंक्स की तरफ आ जाएं, हम डायमंड बन जाएं, ब्लू डायमंड बन जाएं, डायरेक्टर बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, एम्बेसडर बन जाएं। तो हमारे पास तब भी प्लेटफॉर्म रहेगा कि कंपनी हमें, जैसा कि पहली पोजीशन के ऊपर कंपनी आपको टिकट देगी टोकन 2049 के इवेंट की। और अगर आपके पास टाइम हो तो देखिएगा गूगल पे जाके कि इसकी सिर्फ टिकट की कितनी कॉस्टिंग है। तो आप समझ जाइए कि इस इवेंट पे सिर्फ वो लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग क्रिप्टो को लेके सीरियस है, जो लोग ब्लॉकचेन को, AI को लेके सीरियस है, क्योंकि इसकी टिकट इतनी एक्सपेंसिव है। जो लोग सिर्फ वैसे विंडो शॉपिंग करने जाते हैं वो इस इवेंट पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई ही सीरियस है। और आप सब लकी हैं कि आपकी कंपनी का अपना स्टॉल रहेगा वहां पे। सो ये भी एक ग्रेट न्यूज है आपके लिए। तो मैं सभी को इंकरेज भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि प्लीज आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी टीम के 10 से 20 लोग इस इवेंट पे जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब वो इस इवेंट पे आएंगे उनको एक क्लैरिटी मिलेगी कि M20 कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो लोग सिंगापुर में आए, आपने देखा कि सिंगापुर आने के बाद हम कितना बड़ा ग्रो हुए। आप इमेजिन कीजिए कि टोकन 2049 दुबई के बाद क्या होने वाला है और हम क्या करने वाले हैं।
तो ये मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, आपकी टीम्स आए, आप खुद आए, मैक्सिमम लोगों को दिखाएं। देखिए, हम जूम के ऊपर फीलिंग्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम जूम के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। फीलिंग्स ट्रांसफर होंगी जब वो उस इवेंट पे, जब वो उस वेन्यू पे खुद खड़े होंगे और देखेंगे कि बाहर के लोग कितना इंटरेस्ट शो करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और लास्ट पे, क्रिप्टो इज अ होल्डिंग गेम। आप सभी को पता है, आई थिंक अगर हम रियलिस्टिकली क्रिप्टो के अंदर हम काम कर रहे हैं तो सबको ही पता है कि क्रिप्टो इज अ होल्डिंग गेम। ये पेशेंस की गेम है, ये पेशेंस का काम है। मैंने यही, मिस सेडी ने हमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी पेशेंस के ऊपर कि हम सब्र रखेंगे तो कामयाबी आएगी। इम्पेशेंस की तरफ अगर रहेंगे ना, इम्पेशेंट कि भाई अब आप बताएं, आप बताएं। कुछ लोग चाहते हैं उनको डेली अपडेट दी जाए, तो डेली अपडेट आपको क्या दी जाए कि हमारा डेली काम यह है कि हमें ऊपर वाले ने एक और अपॉर्चुनिटी दे दी कि अब हम दोबारा mCoin अंडर $1 बाय कर लें। इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी चाहेंगे आप? अब जैसे मैंने सोलाना की एग्जांपल आपको पहले दे दी, मैटिक की आपके सामने। इस पे अगर मैं आपको बताऊं कि इमेजिन कीजिए जिन लोगों ने $2.5 के ऊपर मैटिक बाय किया और जब मैटिक 50 सेंट पे गया, आपको क्या लगता है कि उनके दिलो दिमाग में कौन कौन सी फीलिंग आई होगी कि भाई अब तो ये बंद हो गया, अब तो ये खत्म हो गया। लेकिन जो क्रिप्टो में एक्सपर्ट लोग हैं, जो क्रिप्टो की मार्केटिंग सेंस समझते हैं, जिनको जिनको इकोसिस्टम्स पढ़ने और समझने आते हैं, उनको ये समझ आ गया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें हम ओवरनाइट, ये शीबा इनू नहीं है कि आपने इधर से डाला उधर से निकाल लिया फिर कंपनी बंद, फिर प्रोजेक्ट बंद। और मिस सेडी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजों को बिल्ड होते हुए, डेवलप होते हुए टाइम लगेगा। तो जब भी कभी आपके दिल में ये ख्याल आए या दिमाग में ये ख्याल आए कि यार mCoin का क्या बनेगा, mCoin किस तरफ जाएगा, तो एक काम कीजिएगा, CMC कॉइन मार्केट कैप पे जाके कोई कॉइन खोल लीजिएगा अपनी मर्जी का। देखिए, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं तो आपने क्रिप्टो को क्रिप्टो से ही कंपेयर करना है, आप क्रिप्टो को ट्रेडिशनल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप अपनी मर्जी का कॉइन खोलिएगा, उसका चार्ट खोलिएगा और देख लीजिएगा कि वो किस तरह फ्लक्चुएट होता है। क्योंकि ऐसी ही इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो ये सबके लिए मैसेज ये रहेगा कि आप थोड़ा सा खुद भी और अपनी टीम्स को भी, एजुकेशन की कमी है हमें। हम अगर एजुकेट करेंगे और हम सही सोल्ड करेंगे, अगर हम लोगों को ये प्लान एज ROI बेचेंगे कि भाई तुम इतने पैसे लगाओ तुम्हें इतने पैसे आएंगे, तो जिन जिन लोगों ने तो ये बेचा था, आज सब वो लोग परेशान बैठे हैं। आज सब वो लोग अपनी अपलाइन को, ताहिर भाई को, स्पार्टन्स को और मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई, और मिस्टर डेनिस को मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने मुझे दिखाए कि भाई mCoin कब जाएगा, mCoin ऊपर कब जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को एज अ क्रिप्टो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट करके लोगों के साथ शेयर किया, लोगों के साथ लोगों ने उन पे देख के उस पे इन्वेस्ट किया, वो लोग आज बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। वो लोगों को पता है ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो ये हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि इसको ROI प्लान करके मत बेचें, इसको एक स्कीम करके मत बेचें कि आप इतना लगा लें आपको 2 माह बाद इतने पैसे मिलेंगे, आप इतने पैसे लगा लें 6 माह बाद आपको इतने मिलेंगे। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग आज स्ट्रेस में भी हैं। वो ही लोग हैं जिनको लग रहा है कि mCoin को कुछ हो जाएगा, वो ही लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनके अलावा mCoin नहीं चलेगा। तो मैं ये आपको क्लैरिटी से बता दूं, अगर mCoin एक शीशे की मानद है, mCoin एक कैमरे की मानद है, आप जिस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे ये आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। अगर आप इसको एज अ डिजिटल एसेट करके बेचेंगे, एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस करके बेचेंगे, तो ये इसी तरीके से आपको गुड न्यूज भी देगा, आपको खुशी भी देगा और आपको जो है ना वो लक्ष्मी भी देगा। लेकिन अगर आप इसको एब्यूज करेंगे एज अ ROI प्लान बना के, जो कि कंपनी ने कभी भी नहीं कहा, किसी फॉर्म के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी ने इसको एज अ ROI प्लान करके नहीं बेचा। अगर आपने इसको एज अ ROI करके प्रेजेंट किया, ROI करके आपने किसी को बताया कि भाई आप इतने लगाओ आपको इतने आएंगे, आज आप ट्रबल में हैं। और आप अगर दोबारा करेंगे तो दोबारा आप ही ट्रबल में होंगे, क्योंकि कंपनी की किसी लीडरशिप ने, कंपनी के किसी ऑनर ने ये बात किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कही कि आप इतने लगाएं
आपको इतने आ जाएंगे, मंथली आपको इतने आ जाएंगे। हमने इसको समझना है कि मीथर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। हमने इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है। इसको एज अ, इंग्लिश में हम कहते हैं कम गेट रिच स्कीम लेके ना चलें कि आओ आके अमीर हो जाओ। ये स्कीम तो है ही नहीं है मीथर का, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है मीथर का। ये एक ऐसा बिजनेस है, हाँ, जिन लोगों ने 20 सेंट का कॉइन बाय किया था, 2 से 3 साल बाद वो $3 पे बेच पाए, जिन्होंने 20 सेंट 10 सेंट पे बाय किया था। तो अगर ये लोग इम्पेशेंट होते और बोलते कि नहीं हमने 6 माह बाद इसको $3 पे बेचना था, तो वो तो आज बिजनेस में मौजूद ही ना होते, वो तो बिजनेस छोड़ चुके होते। तो इसको समझने की जरूरत है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आज जो लोग ये मेरी प्रेजेंटेशन मिस्टर डेनिस को आपने सुना, आज आपके पास सिर्फ लास्ट चांस है, लास्ट चांस। क्योंकि आप जैसा ही आप सबको पता है कि कंपनी ने एक बहुत दफा अनाउंस किया कि mCoin की जो स्टेकिंग है वो ऑफर आपको एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगी, और अब दोबारा आपके पास वो ऑफर आ गई कि आप mCoin को $1 पे स्टेक कर सकते हैं। तो आई थिंक अब कोई ऑप्शन नहीं रही पीछे, अब कोई एक्सक्यूज नहीं रहा कि हम कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से होगा। लास्ट नोट पे मैं ये सबको बोलूंगा कि कंपनी को अपना काम करने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। कंपनी की सस्टेनेबिलिटी, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की लॉन्जेविटी, कंपनी का लंबा चलना, कंपनी का ग्रो करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की मैनेजमेंट की और कंपनी के सीईओ की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी जो भी आपका मशवरा होगा, जो आपका आइडियाज आप शेयर करेंगे, वो उसको बिल्कुल प्रायोरिटी दी जाएगी, वो बिल्कुल प्रायोरिटी के ऊपर ही डिसीजन होगा। लेकिन एज अ लीडर, एज अ स्पार्टन, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ डायमंड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो लोग सुन रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर भी हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, एज अ इन्फ्लुएंसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करें। जब भी प्रेजेंट करें, आप ये दिमाग में सोचिए कि आप अगले वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ना कि आप इतनी स्ट्रेस में हो कि वो आपको ज्वाइन करे। अगर आप डेस्परेशन दिखाएंगे ना, तो वो फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपने आइडिया ये रखना है, और जो कि सही बात है, मीथर की लोगों को जरूरत है आज। आज मीथर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है कि मीथर किसी भी वीसी से पैसा ले सकता है। अगर मीथर चाहे तो किसी वीसी को इंक्लूड कर सकता है, या बहुत सारे वीसीज को लेके आ सकता है। लेकिन हमने इसको एक फैमिली बनाया, हमने इसको एक होम बनाया, हमने इसको एक घर बनाया। तो एज अ मीथर फैमिली, एज अ वन बिग फैमिली, हम इसको कंक्लूड करते हैं। और मेरा मैसेज आप सबके लिए यही रहेगा कि गाइस, फोकस रहिए, ट्रैक पे रहिए। यही टाइम है कि जब आपकी लॉयल्टी टेस्ट होगी, यही टाइम है जब आपका माइंड सेट टेस्ट होगा, यही टाइम है जब आपका पेशेंस टेस्ट होगा, और इसी के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। सो आई थिंक आज की कॉल एक बड़ी ही प्रोडक्टिव कॉल रही, जिसपे हमने सारे एक्सपेक्ट्स को टच किया। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मिस्टर ताहिर हुसैन का भी, आप इस कॉल में आए, अपनी टीम्स को इन्वॉल्व किया। मिस्टर साजवान, आपने कॉल को ऑर्गेनाइज किया। मिस्टर अनुराग गेरा जी, आप कॉल के ऊपर आए। और इसी के साथ मिस्टर डेनिस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। Also, thank you so much, Ms. Sadie Raful. You joined straight away from Australia with us. And also thank you to Ms. Elena. You were on the call with us. और इसी तरीके से बनी रहिए। हम कोशिश करेंगे हम इन कॉल्स को कंसेक्यूटिव चलाते रहें, ताकि सभी लोगों के साथ सिंगल हैंडेडली इंफॉर्मेशन शेयर होती रहे। सो आप अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि वी आर वन, वी आर मीथर। Take care and have a very, very good night.